Am I audible now? Yes, now check now here, check करके बोलिए, am I audible now? चेक करके बोलिए अभी, am I audible now? Tell me. Okay, fine, thank you. Right. चलो, let's start our discussion. So here आज हम डिस्कस करने वाला, so this is equivalent resistance का calculation method. So the two different methods we are going to see. So in this, the 7 different method you will become master in the calculation of equivalent resistance. And chaliye, the first one is a basic method, second one is a ladder problem, and third one is parallel symmetry, perpendicular symmetry, balanced bridge concept, unbalanced bridge wala problems, and VTAT method. ठीक है? So this can be, so we discuss now here. One by one we'll discuss करेगा. सबसे पहले basic method हम शुरू करेगा. A basic method means what? Tell me now here. So basic method. So like as you might be know here, if the resistors are in series, how we can find? If the resistors are in parallel, how to find the equivalent of them? That we are going to see now here. That is a basic method. That means इसमें हमने directly पता चलेगा resistor कैसा connection है, whether it is series connection या parallel connection. Yeah, tell me now here. So अगर simple example अगर हमने कुछ मान लिया तो right. So let us consider we have the resistors. It could be like this. So we should able to identify the connection directly. By देखने के बाद directly हमको पता चलेगा. Then we can say that that is series connection we can do. If we have a R1, R2, R1 and R2. So can you find the equivalent of these two? You tell me. Now this connection which we can call it as what? Tell me, series connection. Series connection which I can say this as what? Tell me now, R1 plus R2. So this is equivalent which is given as what? You tell me. R equivalent is R1 plus R2 hoga. Right. Next, agar if we have a connections are like this. So if we have the two resistors, it could be like this. If the resistors are like this, now this is R1 and R2. And what the equivalent resistance of these two here? Tell me. To resistor case, we can directly apply R equivalent is what? Tell me. R1 R2 by R1 plus R2. R1 R2 by R1 plus R2. Isn't it? Tell me. If we have two resistors are there, अगर if the more than two resistors है तो हम तो क्या करना पड़ेगा? If the parallel connection case more than two resistors parallel में है तो if we have the situation like this, R1, this is R2 and this is R3. Yeah, बोलिए ना here. If we have more than, in this case, R equivalent 1 by R equivalent, which is equal to what? Tell me. 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. All of you बोलिए. If we have more than two resistors are there, ये formula use करना पड़ेगा. ठीक है? चलो. Now, so generally you can see now here, for example, I'll give you some trick to find the equivalent resistance parallel connection fastly. Yeah, you tell me now, if we have a 2 ohm resistance which is parallel to 4 ohm resistance, can you tell me the equivalent of these two? Equivalent of these two. What we can say now here basically, that is
Yeah, we can do it as 2 into 4 by 2 plus 4 will do now. So that means how much will come here? 8 by 6 will cancel with the, this is 2 4, 2 3. So will come it as what will mean 4 by 3 milega, isn't it? Now instead of that, so अभी हमने हमारा ट्रिक कुछ देने वाला. So ये ट्रिक क्या है देखो इधर. ये ट्रिक क्या है देखो इधर. So a trick, so you can see now here, if the 2 ohm which is parallel to what element of here 4. So now you see this thing, what we can do here, equivalent, how to find out now here. Now this thing, so 2 and 4, since a parallel, now I'm indicating the parallel as like this. This is a parallel symbol I'm indicating. Okay? 2 parallel to 4. Now you see this thing here in this case. Now सबसे पहले 2 means what element of 2 का denominator क्या है 1. 4 means 4 का denominator क्या है 1. So what we can do, सबसे पहले numerator को equate करो. What we should do here, numerator को equate करो. Numerator is what element of here इसमें. So here this is 4 and here we have 2 ना. Numerator को equate करो. So numerator को equate करने के लिए so तो क्या करना पड़ेगा. Here multiply with 2, multiply किया तो so 2 से divide करना. अगर 2 से multiply किया तो 2 से divide करना. अभी इसका वैल्यू देखो इधर, अभी both numerators are same ना, both are same है तो so एक वैल्यू ले लो, 4 ले लिया. इसके बाद डिनोमिनेटर को सिंपली ऐड करो 2 plus 1. So how much this value tell me now here, that is 4 by 3. Got it? So you see this thing exactly what we got previously, we got the same thing we got now. अभी समझ में आया? Okay. Whenever we have the this type of combination, we can do this a trick हम use करेगा. ठीक है? So yeah, you tell me now here. We'll do some questions in practice also. Now you can tell me now here. So let us consider 4 parallel to, yes, let us say here 2 parallel to, that is 2 parallel to 4 parallel to 8. Let us consider we have like this. Can you tell me now what we can do? So here 2 parallel to 4 parallel to 8. So क्या होगा, you tell me. So हमने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को इक्वेट करना पड़ेगा. So tell me here denominator is 1, here the denominator is 1, here the denominator is 1. So the denominator is 8 ना. So denominator इक्वेट करने के लिए so हमने क्या करना पड़ेगा, so इधर 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 2 से डिवाइड करो. So इधर 4 से मल्टीप्लाई करो, इधर 4 से डिवाइड करो. अभी डिनोमिनेटर इक्वल है ना, बोलिए. अभी denominators equal है ना. So you can tell me now here. So that means 8. Numerators equal है ना, numerators is 8 ना. अभी तो क्या करना पड़ेगा, so अभी denominator को add करो, that is 4 plus 2 plus 1. How much this value tell me now, 8 by 7. समझ में आया कि नहीं, बोलो आप सभी को. अगर समझ में आए तो दिल बना लो पे everybody. सो लाइक दिस ये ट्रिक हम यूज करेगा, कभी कभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये ट्रिक काम आएगा. ठीक है, चलेगा. सबने बोलो यार, समझ में आया कि नहीं. सो दिल बना के बोल. गॉट इट एवरीबॉडी. ठीक है.
चलो हमारा प्रॉब्लम हम शुरू करेगा. टेक दिस प्रॉब्लम. If R equivalent in the circuit is given as a 50 ohms in the circuit shown. Now they ask him to find the value of small r is. Now they ask him to find the value of r. So yeah, you can see now here. You see this thing here. Now you tell me now how these three resistors you see. Tell me how these three resistors are. These three resistors are in parallel. These three resistors are in parallel. Can you tell me the equivalent of these three resistors? Can you tell me the equivalent of these three resistors? You can tell me now. 12, 12. So yeah, you tell me now here. This is 12 parallel to 12 parallel to 12. Now you tell me. So that means 12 means 12 by 1, 12 by 1, 12 by 1. So means what we can say, numerators are equal, simply denominator को add करना, numerator equal. So this is what will be now 12 by 3 means which is equal to 4 ohms na. Numerators equal, denominator को simply add करो. So this is 12 by 3. So that is 3 plus r. This is series na and 10. This whole part यहाँ तक पूरा कितना बनेगा, you tell me. How much this much value, tell me, which is equal to 14 plus r banega, you tell me. That is 14 plus r banega. Now finally it is, you can tell me now here, r equivalent क्या है? R equivalent को क्या बोलेगा, you tell me now here. This is 30 plus, tell me now here, 60 parallel to what, tell me now here, 14 plus r na. Now since here this is not a number, we cannot do, हमारा trick नहीं चलेगा इधर. This is not a number ना, so इसीलिए. So हम normally continue करना अभी इधर. So that means r equivalent which is equal to what, tell me, 30 plus, that is 60 into 14 plus r by 14. So 74 na, how much this value? 74 plus r. Now this value given as what, tell me the problem है क्या दिया, 50 दिया ना इधर, 50. So which is equal to what we can say now here, 30 plus 60 into 14 plus r by, so that is 74 plus r बनेगा. Now so which is equal to 60 equal to what, tell me now, 20. So this is 60 into 14 plus r into what, tell me now, 74 plus r बनेगा. So अभी simplify करो इसको. Now you can tell me now, will get cancelled. So this value, yes, so this is 3 times na. Then it is 74 plus r which is equal to what, tell me now here, 42 plus 3r बनेगा ना. या सिंप्लीफाई करके बोलो क्या आएगा इधर. So this is 74 minus 42 which is will come it as 32 which is equal to r na. So r will becomes as what, tell me now here, 16. Got it everybody? Yes, all of you do like the session, share to all. Do like the session everybody. सभी ने like करके share करो अपना friends को. Do like the session everybody. Do like the session, share to all your friends. Yes, chalo next problem.
calculate the equivalent resistance across this A and B. Equivalent resistance. So for this A and B, yeah, you can tell me now here. First of all, copy करो problem, copy करके try करो. So then this value, how much this value? Tell me now here. So this is 8. Now you see this thing 8, 8, 4 are in parallel now. Can you tell me now here? This is 8 parallel to 8 parallel to 4 now. So how much this value? Can tell me. Numerators को equate करना, denominators को add करना. So means 1 plus 1 plus 2 ना. So this value how much now here? 8 by 4. इसका मतलब this value which is equal to 2 हो गया. Means the whole value, this whole value, how much you tell me now here? 2 ohms. Next you do 10, 10, 5. So then you tell me now this value. अभी इसका value is what? Tell me now here. 10 parallel to 10 parallel to 5. Now you tell me which is equal to. Numerators को equate करो, denominators को add करो. Denominators क्या है? Tell me now here. 1 plus 1 plus 2 ना. So this value what we can say now? 10 by 4. Yes, so which is equal to 5 by 2 means 2.5 बनेगा. Now finally what is this thing? RAB you tell me. That is 2 plus. That is 2 plus 2.5. बोलो now how much this value finally now हुई है? 6.5 ohms. Got it? Next one. Calculate the equivalent resistance at terminals A and B. Now here this is 20 and 30. How these two you tell me now? Parallel. How these two are? You tell me now. These two are in parallel. So let's find the equivalent of these two. So equivalent of these two, what we can say now here? Simply I can apply the formula. This is 20 into 30 by 20 plus 30, which is equal to 50. So that means 0 and 0 cancel. 5 fourths now here. So how much this value which is equal to 12 banega? Now this 12 and 8 are in series, which is 20. So finally what is the R equivalent? You tell me now here. RAB क्या बनेगा? You can see now here. This is 5 parallel to what? Tell me. 8 plus 12 na. So which is equal to 5 parallel to what? Tell me now. 20. Numerators को equate करना, इसीलिए yes 4 से multiply किया तो 4 plus 1 which is equal to 5 बनेगा. So the answer is how much? You tell me now. 4 ohms. Bolo everybody. Done. Next. Next. Now see this one here. In this case, this is called as a lattice network. This is called as a lattice network. Now see the network, how it is. You see this type of problems. देखो इधर how we can do easily.
whenever we have this cross connections हमको डर लगेगा, isn't it? So इसीलिए so here ध्यान से देखो how we can do this thing. इसका बीच में कनेक्शन तो नहीं है, ठीक है, like this. So they given this is A, they given this is B, and this is C, this is D, right? Yeah, look at now here what we can do. Now, first of all, you tell me now what I need to find now here. Equivalent resistance between A and B. So what that means, we should find what, tell me now, RAB. We need to find RAB. देखो RAB के लिए क्या देखना पड़ेगा? So here whatever this is, extra tiles we have now, those things will be cut down करना पड़ेगा. Here, so that means C part is not required and D part is not required. ना simply remove करो पहले. Yes, अभी ध्यान से देखो इधर करंट. So here A से शुरू होगा and finally B पर वो सारा करंट B पर आना पड़ेगा. Yes, अभी देखो इधर करंट का पाथ देखो, you tell me now here current. So this current, इसमें कुछ करंट जाएगा, this current is I1, and इसमें भी कुछ करंट जाएगा, this current is I2, right? Now you can see now this current I1 will go like this and like this, and so via this resistance, okay, value is not, so this is 1, and this value which is equal to 2 ohms, and this is 3 ohms, and this is 4 ohms. Now you see this current will go like this, panel will come here now. That means the current through this 1 ohm and 3 both are same, isn't it? So what we can say, tell me now here, how this 1 and 3 are in series. Means what we can say now, 1 plus 3, these two are series now, and parallel to what we can say, tell me, 2 and 4. So these are, so that is 2 plus 4 I can say. समझ में आया this thing? Everybody tell me बोल के, हाँ? Everybody, so इस लिखना समझ में आया कि नहीं? बाकी सिंप्लीफिकेशन तो हो जाएगा, isn't it? सब नहीं करेगा ये बाकी सिंप्लीफिकेशन, isn't it? बोल. So means here we have, tell me now, 4 parallel to 6. So how much this value, tell me? How much is RAB? 4 and, sorry, RAB we are finding here. Here RAB we wrote. So just imagine RAB I am doing first. Okay. We'll simplify it now. बाकी simplification हो जाएगा कि नहीं? So this value which is equal to 2.4 ना? 2.1 or 2.4? देखे बोल. Yes, Tiwari. Next. So tell me now RAD के लिए बोलो, A to D. So A is the starting point, B is the ending point ना? And where is a D, you tell me now here? Here this is a D, right? This is a D. इसीलिए हमको B नहीं चाहिए. So simply B को remove करो. B को remove किया मैंने. Now you see this thing here. So this current I2, so this सारा current इधर पर आना पड़ेगा. Here you tell me now this current, so I1 will go like this, will go like this, and will go like this. And this I2 current will go like this, you tell me. I2 current will go like this, so which is equal to what we can say, tell me. I2 current will go like this. Now here इस पाथ में जाएगा.
So you see this thing here. Now this I1. So via this now current passing 1 and 3, 4 is same na. So I can say these are in series 1 plus 3 plus 4, and those are parallel to what? Tell me now. 2 पर parallel होगा ना? You tell me. आया? Done. Now this is what? Tell me now here. 8. So parallel to 2. So which will come it as what? Tell me now. 1.6 बनेगा. नेक्स्ट ये टू सी बोलिए. अभी ये टू सी बोलिए. So C. So here this is the C ना. Tell me. So तो D नहीं चाहिए. D को रिमूव किया मैंने. So सारा करंट C पर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा. Right. Now you can see the flow of currents. You see this thing. इस पाथ में I1 गया, इस पाथ में I2 will go like this, again will go here now in this path, and finally will come like this. ठीक है. So you see this thing in this path में. So look at now here. 2 में, 4 में 3 से जाएगा, इसके बाद 3 से जाएगा, and parallel to what? You tell me now. 1 को parallel होगा. You see. Right. How much is value? So this is 9 parallel to 1 now. Tell me. How much? Which is equal to 0.9 बनेगा ना? You tell me. Oh. Next, what else now here? B to C required ना? So here is B, right? Here is C. So अभी ये नहीं चाहिए ना हमको? Is not required. Right. So then B पर शुरू होगा करंट, and वापस ये पर आना पड़ेगा the current. Okay. Now you see this thing here. In case of RBC के लिए path बोलिए. You tell me. RD to C के लिए path बोलिए. इसमें कुछ करंट गया. So इस पाथ में, इस पर इधर इस पाथ में करंट जाएगा. राइट. सो दिस इज में पहले 4 से जाएगा, इसके बाद 2 से, इसके बाद 1 से गया, and that is parallel to what? You tell me now here. This is no, this is, and this is 3. ठीक है. बोल. So that means what we can say now here? 7 parallel to 3. So which is equal to how much now here? 21. बढ़िया. बोलिए. ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया? ये लैटिस का प्रॉब्लम. सो I hope you can able to solve any lattice network problem. Simply केवल प्रॉब्लम में क्या दिएगा? कुछ अलग अलग वैल्यूज देगा. They will give some other different values they can give. We need to find these values, right? So we can do like this now. Tell me. Yes. सबने दिल बना के बोलो यार. So हो जाएगा कि नहीं? कोई दिक्कत होगा क्या आपको? चलो. Now ये प्रॉब्लम बोलिए इसका आंसर. Now take this problem. Find RAB in these 3 circuits. अगर प्रॉब्लम ऐसा दिया तो हाउ वी विल सॉल्व इट? अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो दिल तो बनना पड़ेगा ना.
दिल तो बनता है यार, right? So this means what, tell me now here, this is A and this point is given B. ठीक है, अगर if there is no element between the 2 points, अगर इसका बीच में कोई एलिमेंट नहीं तो then we can say those 2 points are same potential, same points. Right, to tell me now here, this point A means this point is also we can say it as A only na, tell me. Right, so this point is B, इसका बीच में कोई एलिमेंट तो नहीं ना, so इसीलिए ये B बनेगा. So this is B, this is B, this is B, this is B, this is B. यहाँ तक कोई एलिमेंट नहीं ना, so this point also we can say B only ना. So this is B, this is B, this is B, this is B. इधर भी B होगा ना, so this B, B, B इधर जाएगा, ऐसा ऐसा होगा ना, this is B. And this is a पूरा के पूरा सर्किल, so ये B होगा, you tell me. Yes, the circumference of a circle पूरा B बनेगा, right? Yeah, you can see now here, so you can tell me now here, this point I am calling it as A and this point which I am marking it as a B. You can see now इसका बीच में resistance है ना, place करो 1/1 resistance. ये रेसिस्टेंस किधर, यू टेल मी नाउ, ए टू बी का, ए टू बी में है ना, बीच में हुआ, सो हियर प्लेस करो ए टू बी. सो दिस रेसिस्टेंस इज बिटवीन ए टू बी, प्लेस किया मैंने. एंड दिस रेसिस्टेंस इज आल्सो ए टू बी ओनली ना, ए टू बी मींस इधर भी ना, सो प्लेस करो ए टू बी, प्लेस किया मैंने. सो ये रेसिस्टेंस इज आल्सो ए टू बी ओनली ना, सो वो भी प्लेस करो, किया, हो गया, बोलिए. सो नाउ अभी देखो इधर ए थ्री रेसिस्टर कैसा दिख रहा आपको, यू टेल मी. सो सिंपली डायरेक्टली पैरेलल में हुआ ना, सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, टेल मी नाउ, दिस आर ए बी क्या बनेगा, यू टेल मी नाउ, दिस इज R/3 होगा. सो न्यूमरेटर सा सेम, डिनोमिनेटर को ऐड करना, सिंपली डिनोमिनेटर को ऐड किया मैंने. राइट, या इधर भी बोलो, इधर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेगा, देखिए बोल. या दिस पॉइंट इज ये एंड दिस पॉइंट इज बी, इसका बीच में कोई एलिमेंट तो नहीं ना, सो इसीलिए ये बी बनेगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा ना, यू टेल मी. नाउ अभी देखो इधर कितना रेसिस्टेंस है, यू कैन सी नाउ हियर 4 रेसिस्टेंस है ना इधर, ये 4 रेसिस्टेंस प्लेस करो इधर. So and this point I am calling it as A and this point is B. Now you can see now here, this resistance is between where to where, you can see now here A to B में है ना, so place करो this resistance and ये भी इसका A to B में है ना, place करो. And this is also between A to B हो ना, so place करो. प्लस पर नहीं है, दैट इज स्पेशल क्लास में, अभी लिंक भेजा ना मैंने, दैट इज अ स्पेशल क्लास है, लिंक भेजा ना. राइट, दिस इज आल्सो बिटवीन ए टू बी ओनली ना, दिस इज आर, हो गया. नाउ यू टेल मी नाउ हाउ दिस 4 रेसिस्टर्स, यू कैन सी how these 4 resistors, all these resistors are in parallel में है ना, how these resistors, all these are in parallel. So that means what we can say now, this is RAB क्या होगा, you tell me now. न्यूमरेटर्स are equal, डिनोमिनेटर्स को ऐड करो, that is R/4. ठीक है, या इधर भी बोल. Now you can tell me now, इसमें this point is AI, yes, this point is BI, so this means this point is B. Now this point is B. Now what about this point, now if this point is B होगा क्या, this point is B. Now देखो इधर इसका ये नोड, ये पॉइंट का इसका बीच में कुछ एलिमेंट है ना,
अगर कोई एलिमेंट नहीं तो so then we can say that is the points are same. अगर कुछ एलिमेंट है तो those are not same points. इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसीलिए कुछ दूसरा एलिमेंट को ले लो. So this is कुछ दूसरा एलिमेंट मान लो. So this is some C एलिमेंट, C पॉइंट मान लिया मैंने. So अगर ये C है तो ये भी C है ना, इधर भी ये भी C है ना, इसका बीच में कोई एलिमेंट तो नहीं ना C है. So here this is C है तो ये भी C होगा ना, you tell me. ये भी C है. Got it. बोलिए. Now you can place now here. So here how many elements are there now here? A, B, C, 3 points are there. Place it now here, 3 points. So this point is A and this point is C and this point is B हमने मान लिया. Yes, you can see now A to C. This is what we can say now A to C है ना? A to C and this is R. This is also between way to way. Now A to C है ना, place करो. This is A to C, place किया. And this is R. This is also between A to C. So place करो. And this is R. Now you tell me now this resistance is between way to way. You tell me now this part resistance. C to B. C to B means here I na place करो. C to B, this is R and this is between B to C ना, so this is place करो. Place किया आप सभी ने, बस. हाँ. Ramanamurthy, so here why you have this type of question here? Why you have this type of question? Yes, my mother tongue is Telugu. Yes. So you might be seen. मेरा नाम देखा ना आपने? You might be seen my name ना? Isn't it? Right. So you tell me now here how these three resistors, you tell me, पैरेलल में है ना, पैरेलल में. सो इसीलिए व्हाट वी कैन से दिस इज नाउ R/3 होगा. नाउ दीज टू आर इन पैरेलल में है ना, सो इसीलिए R/2 हो गया. सो दैट मीन्स अभी वी कैन से नाउ द फाइनली इक्विवेलेंट क्या है. सो ये दोनों सो सीरीज में है ना, सो दिस इज R/3 प्लस R/2. सो क्या आएगा आंसर, बोलो इधर, which is equal to finally this is 5R/6 होगा. Got it everybody? Done? बोल बोल बोल. Completed everybody? Done ना? चलो. Next. Now take this problem. Find one by one. इस प्रॉब्लम में आपको सारा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में हो जाएगा. So first what we need to find now here, equivalent resistance between X to Y.
आर एक्स वाई फाइंड आउट करना, आर एक्स वाई। एंड सबसे पहले यू सी दिस थिंग हियर, सो देयर इज ए शॉर्ट पाथ इज देयर ना, इधर वी हैव शॉर्ट पाथ इज देयर, सो पूरा करंट इस शॉर्ट में जाएगा, सो इस करंट में कुछ करंट नहीं जाएगा, सो हियर दिस करंट पासिंग थ्रू दिस रेसिस्टर इज व्हाट एलिमेंट ऑफ जीरो होगा। अगर एक करंट जीरो आई तो सो व्हाट वी कैन से नाउ हियर दिस एलिमेंट, so what we can call this element, which we can call it as what element now here, dead element call, we can call na. So then this element which is called it as what element of dead element, so this dead element we does not affect the circuit operation, इसलिए we can disconnect the dead element, so ये via this resistor कुछ करंट नहीं जाएगा, ठीक है, ये सबसे important point है। Now let us find one by one. Tell me now RXY, RXY बोलिए now here, X2Y we should find the equivalent ना, इसीलिए पाथ देखो इधर, X2Y का पाथ देखो, X2Y का पाथ देखो, you tell me now here, अभी क्या फाइंड आउट करना, you tell me now here, RXY we have to find ना, इसका मतलब X पर करंट शुरू होगा एंड फाइनली y पर आना पड़ेगा, इसके लिए पाथ देखो इधर, यू सी नाउ, सो यू कैन ड्रॉ द पाथ एक बार देख के। नाउ दिस पॉइंट इज x, दिस पॉइंट इज x, नाउ यू कैन सी नाउ इधर कुछ करंट जाएगा, सो दिस ब्रांच, now you see this thing here, branch ये शॉर्ट हो गया कि नहीं बोल, इस पाथ में कुछ करंट नहीं जाएगा, yes here भी एक रेसिस्टेंस है ना, this is y, now you can see now this is 3 ohms and this is 1 and this is 6 ohm, yes, now you tell me now here this is the path, yes, ये पाथ समझ में आया बोल सभी को, सो हियर इस पाथ में करंट जाएगा क्या, नहीं जाएगा, सो क्योंकि अगर इस पाथ में जाए तो ये वापस वाई पर नहीं आएगा, isn't it? सो ये पाथ पर वाई को कोई कनेक्शन नहीं ना, इसीलिए इस पाथ में करंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, या यू टेल मी नाउ हियर, now you tell me now how these two resistors, you tell me, and how these two now here 3 and 6, these two are in parallel, how much this value 2 banega, that is what is this thing RXY, you tell me, RXY that is 3 parallel to 6 plus 1, so this value that is 2 plus 1 so this value how much, you tell me now, 3 ohms, okay, now try to find out this thing here, so this is RXZ, find out करो X2Z, X2Z का पाथ देखो, what is the X2Z का पाथ, now this is now X से some current started, so finally the current has to come back to Z, या देखो ना इधर इस पाथ में करंट शुरू हो गया, इसके बाद you see this thing here, इस पाथ कुछ पाथ, ये पाथ, yes like this ऐसा होगा, you tell me, this is X and this is Z, you see this thing, इस पाथ में कोई रेसिस्टेंस है क्या, you tell me, इस पाथ में do you have any resistance, you tell me, कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं आई,
So that means what I can say, you tell me now here, what is this thing R X Z which is equal to 0 ohms? कोई डाउट हुआ तो पूछो जल्दी, नहीं तो दिल बना लो। अगर कुछ डाउट हुआ तो बोल, नहीं तो दिल बना लो। अगर इसमें डन। Next, so now here try to find out this thing as RXP ball, इसमें RXP ball, that means X2P पांच देखो इधर, X से शुरू हुआ होना, फाइनली P पर आना पड़ेगा इस पर। So इसका पाथ देखो इधर, so this is इधर करंट शुरू हुआ and this current finally P पर आना पड़ेगा। या you can see now अगर कुछ करंट so इस पाथ में गएगा क्या, so this current will come like this। अगर इस करंट पाथ में जाएगा क्या, अगर इस पाथ में जाए तो इधर, so then ये वापस P पर नहीं आएगा, इसीलिए दिस करंट क्या है, टेल मी नाउ, जीरो होना पड़ेगा। अगर इधर कुछ करंट गया तो इधर वापस P पर नहीं आएगा, so इसीलिए ये भी जीरो होगा। एंड इसमें करंट जाएगा, इसमें कुछ करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इधर इसको P को कोई कनेक्शन नहीं ना। Okay, fine, I will change the ink. Yes, yes, yellow visible now. Yes, you tell me now, understood now? This is I. देखो, now you tell me now path, you tell me now here, this is X. So here this is X. This. Now after that, this one. So this is what we can say now P now, and this is what we can say now 5, and this is what we can say now 2. So the current इस path में ऐसा जाएगा, you see, ball. This is the effective flow now, effective flow of this current. So you tell me now here, how much the equivalent resistance now, X2P क्या है, that is 5 plus 2 which is equal to 7, बन गया। So this thing what we need to see now here, starting path is X पर शुरू होना, फाइनली P पर आना। अगर P पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं तो देन उस पाथ में नहीं जाएगा, समझ लो। ओके, सो अगर सो हियर P X पर शुरू होगा, इवन दो हियर दिस इज शॉर्ट पाथ, बट लेकिन यहां से आने के बाद इधर इस पाथ में अगर कुछ गया तो, इस पाथ शॉर्ट पाथ में गया तो, सो ये वापस P पर आने के लिए कोई रास्ता नहीं ना, सो इसीलिए इस पाथ में क्यों जाएगा, इस पाथ में नहीं जाएगा। एवरीबॉडी टेल मी नाउ हियर, समझ में आया सभी को एक कॉन्सेप्ट, राइट? Next, yeah, you can tell me now here for this case, find out this thing as so this is RAB, find out karo RAB। here A is the starting point and B is the ending point, so this means A पर शुरू होगा starting, so this current which is equal to A पर शुरू होगा and finally B पर आना पड़ेगा, same current। इसके लिए पाथ हम ढूंढना पड़ेगा,
सो अगर ये करंट सो पी पर इस पाथ में गया तो ये वापस नहीं आएगा, बी का कोई पाथ नहीं ना, सो इसीलिए इस पाथ में करंट जीरो आए। सो देन वी कैन रिमूव दैट एलिमेंट। और इस पाथ में भी जाएगा, यस इस पाथ में जाएगा, एंड देन सो इस पाथ में कोई करंट नहीं जाएगा, सो दैट मीन्स इस पाथ में जाएगा, इस पाथ में जाएगा, इस पाथ में कोई करंट नहीं जाएगा इधर, एंड इस पाथ में जाएगा, एंड इस पाथ में कोई करंट नहीं जाएगा, एंड देन वापस, सो दैट मीन्स इधर आएगा। अभी देखो इधर पाथ देखो, इधर अभी पाथ देखो, सो इधर ए पर ऐसा शुरू हो गया, दिस इज ए, दिस इज ए, एंड फाइनली वापस बी पर आना पड़ेगा, दिस पॉइंट इज बी, right? So you can see now here this इस पाथ में जाएगा, एंड हियर ये भी पाथ इस पाथ में भी जाएगा। सो whichever the path the current is not going, we can remove that branch not required। wherever the current is passing, हमको केवल वो चाहिए इस पाथ में। and now you can see now here this is, अगर this is 1 ohm and this is 5 ohm and this is 3 ohm and this is 6 ohm and this is 4 ohm, you see this thing here, करंट यहां तक इधर जाने के बाद सो इस पाथ पे करंट को सीधा डायरेक्ट हाईवे आई, डायरेक्ट शॉर्ट पाथ आई, एंड इस पाथ में कुछ रेसिस्टेंस है ना, इस पाथ में कुछ रेसिस्टेंस है, दिस इज द सीधा हाईवे पाथ आई, इजंट इट, बिना रेसिस्टेंस, नो लेट अस कंसीडर नो टोल गेट, सो रास्ता भी अच्छा आई। सो दैट मीन्स इसे पूरा करंट इसमें जाएगा ना, इधर इसमें कुछ भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस है ना, रास्ता अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी बोलो ना इधर करंट, पूरा करंट इसमें, सो दिस इज विल करंट का पाथ बोलो, यू टेल मी नाउ हियर, इससे 1 से जाएगा एंड 5 से जाएगा एंड 4 से जाएगा, फाइनली बी पर आएगा। इसके लिए हाउ मच द रेजिस्टेंस यू सी, 10 ohms। बढ़िया। समझ में आए कि नहीं बोल। Yes, current will try to pass us to the low resistance path. So अभी ये भी try करो, you tell me now here। Now let us find R Y Z। try करके बोलो इधर ये क्या आएगा, YZ, Y to Z का पाथ देखना पड़ेगा। सो दिस इज Y पर शुरू हुआ करंट एंड फाइनली Z पर आना पड़ेगा पूरा करंट, पूरे के पूरे करंट, या यू टेल मी नाउ क्या होगा। सो ऑब्वियसली, सो हियर इसमें करंट तो नहीं निकलेगा, इसमें भी करंट तो जीरो होना पड़ेगा, यस इधर इसमें भी करंट जीरो, इसमें भी करंट जीरो, ठीक है। सो केवल वो ब्रांच को ड्रा करो। सो पाथ देखो इधर, यू टेल मी। राइट, नाउ दिस इधर शॉर्ट हो गया इस पाथ, दिस इज Y, एंड इधर दिस इज द ZI, केवल ये पाथ होगा ना, यू टेल मी बोल। और कुछ पाथ, और कुछ और कोई पाथ है क्या, टेल मी। और कोई दूसरा पाथ है क्या इसमें, नहीं है। सो दूसरा पाथ में नहीं जाएगा ना करंट,
यस अगर अभी देखो इधर, सो ये दोनों पॉइंट सेम है ना, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बोथ आर सेम, इसका मतलब ये 3 and 6, हाउ दीज टू यू टेल मी नाउ, या सीरीज में है या पैरेलल में है? सो हियर दीज टू आर, यू टेल मी नाउ, सीरीज में या पैरेलल में है? ये दोनों पैरेलल में है ना, सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से ना, आर वाई जेड देखो इधर which is equal to 1 plus, and 3 and 6 are in parallel, so which will come to be a 1 plus parallel, so which is equal to 2 na, which is equal to 3 होगा। बोल 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 बोल, समझ में आया कि नहीं? जोर से बोल। गुड, बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, so here, so I hope you can able to solve ऐसा problems, so हो जाएगा आपको। अगर ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो यस, सब ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, डन, ओके, या फाइन, या दैट्स इट ऑन दिस फर्स्ट। अभी हमने क्या देखा, यू कैन सी नो बेसिक मेथड्स हमने किया आज पूरा। सो ये बेसिक वाला मेथड्स, बेसिक मेथड का कॉन्सेप्ट हमने किया। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमको ये लेडर का प्रॉब्लम्स करेगा, लेडर प्रॉब्लम्स एंड सिमेट्री, वो भी अभी हम करेगा अगला क्लास में। ठीक है, चलो, हम will meet in the next session, and tomorrow we have the same timing, we have a class that is part 2। पार्ट 2 में विल डिस्कस करेगा लेडर प्रॉब्लम, पैरेलल सिमेट्री, परपेंडिकुलर सिमेट्री, बाकी भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चल, okay then, see you, bye bye, good night।